So we are coming to wax. As already told, wax actually formed of fatty acid and alcohol of high molecular weight. इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन में आपको लिखाया था कि wax is formed of the fatty acid with alcohol other than glycerol. याद है? So here it is not the glycerol actually, but other alcohol which are having the high molecular weight along with the fatty acid that form the wax. Second point is what? It actually forms a protective covering. As it is water insoluble, it forms the protective covering and mostly found in the skin, hair, stem, leaf, fruit. That's it. तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली वाटर प्रोटेक्टिव, वाटर insoluble layer to actually act as a protective covering around the structure present in the animal as well as in plant. थोड़ा बहुत एग्जांपल हम देखिए, इसको स्किप करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल आते हैं. नंबर 1 बी वॉक्स. नाम सुने हो ना? बी वैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बी वैक्स क्या है ना? इट इज अ रियल प्रोडक्ट ऑफ द हनी बीज. रियल प्रोडक्ट ऑफ द हनी बीज. हनी बी का दो टाइप का प्रोडक्ट होता है. एक है हनी, दूसरा है बी वैक्स. Which is the real product of the honey bee? Bee wax. Because the honey, they're actually getting collected from the flower, nectars of the flower. That is why it is not the product of honey bee, but which is the real product? The bee wax. Secreted by the abdominal gland of वर्कर हनी बी. आप लोग पढ़े हो कि हनी बी के जो टोटल कॉलोनी है उसमें 3 डिफरेंट वैरायटी होता है. दैट इज व्हाई दे आर व्हाट? मोनोमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक. फीमेल 2 टाइप, मेल 1 टाइप. मेल जो है वो हैप्लॉइड है, ठीक है, एंड फर्टाइल है. फीमेल क्या है ना? 2 वैरायटी है. वन इज डिप्लॉयड. बोथ आर एक्चुअली डिप्लॉयड. फीमेल बोथ आर डिप्लॉयड. वन इज फर्टाइल, another is infertile. जो फर्टाइल है वो क्वीन है एंड जो इनफर्टाइल है वर्कर है. एंड मैक्सिमम परसेंटेज किस इंडिविजुअल का है कॉलोनी में? वर्कर. क्वीन हाईएस्ट 1 और 2 and male drone that is highest few hundred on. Thousands में कौन है? Worker. And they secrete the bee wax from their abdominal gland. It is actually meant for what? ना formation of their what? ना जो home है, जो chamber है, उसको बनाने में bee wax का utilization होता है. And it is also called bee wax का जो scientific name है, that is called hexacosyl palmitate
और माइरिसाइल पैल्मिटेट as it is made up of palmitic acid and magnesium alcohol। तो यहाँ पे देखिए palmitic acid is the fatty acid and the alcohol which is present is magnesium alcohol, that is why it is called as magnesium palmitate और hexacosyl palmitate। डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर। सो कमिंग टू द एग्जांपल नंबर 2, लैनोलिन। Lanolin, it is actually found in animal form। फॉर्म मतलब जो हम लोग स्वेटर वगैरह यूज करते हैं ना, ऊल है कि नहीं, उसी में प्रेजेंट है लैनोलिन। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द लैनोलिन इज आल्सो कॉल्ड एज ऊल फैट। ऊल फैट इसको बोलते हैं। नंबर 3, हम लोग सब जानते हैं कॉमनली, दैट इज योर ईयर वॉक्स। ईयर वैक्स present in the ear secreted by ceruminous gland और cutaneous gland भी उसको बोल सकते हैं। एंड आप लोग पढ़ेंगे ईयर टॉपिक में 11th में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ईयर वॉक्स। ये क्या करता है बताइए, क्या करता है ईयर वॉक्स? दैट एक्चुअली लुब्रिकेट ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का अदर नेम क्या है, क्या बोलते हैं उसको? टिम्पैनम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनसाइड से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट भी करता है प्लस प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर वैक्स इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन एक्टिविटी, मैंने पहले ही लिख दिया है उसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्स। और क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो सिंपल लिपिड और फैट में और एक प्रेजेंट था जिसका नाम था क्यूटीन। हाँ, क्यूटीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा क्यूटीन फैट present in higher plant। The cutin is present in the higher plant. Especially I am telling it is found in the fruit, leaves, stem, etc. मतलब ये हायर प्लांट में प्रेजेंट है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द लो क्लास प्लांट। ये हायर प्लांट के केसेस में फ्रूट, लीव्स एंड स्टेम्स में प्रेजेंट है, मींस इट इज प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरियल पार्ट ऑफ हायर प्लांट। एरियल पार्ट मतलब द पार्ट व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द एयर इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एरियल पार्ट। तो एरियल पार्ट में कौन कौन आ जाएगा? फ्रूट आ जाएगा, लीव्स आ जाएगा, स्टेम्स आ जाएगा, राइट। सो दीज आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द क्यूटीन। इससे ज्यादा हम लोग को और नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एज पर द क्लासिफिकेशन। याद करिए क्लासिफिकेशन में मैंने क्या क्या बताया था, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कंजुगेटेड। याद आया? वी आर कमिंग टू कंजुगेटेड। Conjugated lipid means here the lipid is present along with the other structure. Lipid plus other is called as what, the conjugated lipid। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग आते हैं उसके अंदर नंबर 1 फॉस्फोलिपिड।
phospholipid, it is found in or present in cell membrane of is present in the cell membrane. First of all, फॉस्फोलिपिड के अंदर मैं एक ही एग्जांपल डिस्कशन करूंगा एंड दैट एग्जांपल इज व्हाट, कौन सा एग्जांपल, लेसिथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, lecithin. First of all, lecithin is present in the wall of alveoli. हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में कि lecithin is secreted by which cell of alveoli. Actually, there are two different type of cell, type 1 and type 2. Type 1 cell of alveoli is actually made up of squamous epithelium, and that is helps in the exchange of the respiratory gases. लेकिन जो type 2 है, that is concerned with the secretion of lecithin. What is the function of lecithin in the alveoli? Actually, they maintain the pressure between the alveolar air and alveolar fluid. अगर प्रेशर को मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, alveoli जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरिया डायरेक्ट इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर. एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. अगर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब एरिया डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे वो कोलैप्स कर जाएगा, एंड कोलैप्स होने से हम लोग का डेथ हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो ब्रीथिंग. So it is the reason why a some amount of air always present inside the lungs even after the forceful expiration. याद है? And that is called as what, the RV. आप कभी सोचे कि RV क्यों बाहर नहीं निकलता है? इसी की वजह से, लेसिथिन की वजह से. लेसिथिन मेंटेन करता है प्रेशर, as it is act as what, the surface active agent और surfactant. तो surface active agent और surfactant वही होगा जो ऑयली होगा, एंड ये क्या है, लिपिड है, तो ऑयली होगा कि नहीं. सो मेंटेन द प्रेशर बिटवीन द एल्वियोलर फ्लूइड एंड एल्वियोलर एयर. मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, खाली इतना लिख देता हूं कि इट इज एक्ट एज ए सर्फेक्टेंट. हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर. act as surface active agent or surfactant which reduce the pressure between alveolar air and alveolar fluid, so prevent the collapsing of lungs alveoli. अभी हम लोग को यहाँ पे लेसिथिन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है. सो लेसिथिन इज कंपोज्ड ऑफ number 1 glycerol, number 2 fatty acid, number 3 1 phosphate, and number 4 1 nitrogenous compound called as choline. One nitrogenous base or compound called as choline. तो ये चार चीज से बनता है लेसिथिन. अब यहाँ से क्वेश्चंस पूरा डायरेक्टली उठाता है बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेसिथिन इज क्लियर कट गिवन इन योर एनसीईआरटी. इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है. पूछेगा
कि phosphate is attached with glycerol और phosphate is attached with fatty acid. Choline is attached with the phosphate or choline is attached with the fatty acid or choline is attached with the glycerol. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको उस डायग्राम उसका स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो हर चीज इजी है. मुझे फिनिश करने के बाद कंफर्म करिए, हम नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे. हो गया? लेट्स सी द स्ट्रक्चर. अब बताइए, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, ये फॉस्फेट इज अटैच्ड विद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड. ग्लिसरॉल. कॉलिन इज अटैच्ड विद फॉस्फेट. तो फिर ग्लिसरॉल के दोनों साइड में क्या क्या है? एक साइड में फैटी एसिड है, दूसरे साइड में फॉस्फेट है. अब जिस साइड में फैटी एसिड होगा दैट विल बी वाटर सोल्यूबल की वाटर इनसोल्यूबल? वाटर इनसोल्यूबल होगा कि नहीं? मतलब ये हाइड्रोफिलिक हुआ कि हाइड्रोफोबिक हुआ? लेकिन जिस साइड में फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड है, हाइड्रोफिलिक. This is called as polar end. This is called as non-polar end. And जहां polar and non-polar both end होता है, collectively called as amphipathic. Both polar and non-polar. Both polar and non-polar end, then it is called as amphipathic. तो पोलर एंड क्या है? इसको बोलेंगे हेड. एंड नॉन पोलर एंड को क्या बोलेंगे? टेल. ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं. थोड़ा सा इशू.
अब यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या है, ग्लिसरॉल दिख रहा है आपको, ये दो क्या है, फैटी एसिड्स, ये क्या है, फॉस्फेट है, एंड दिस वन इज कॉलिन। समझ में आया? तो ग्लिसरॉल के साथ देखिए फैटी एसिड भी अटैच है प्लस फॉस्फेट भी अटैच है, एंड फॉस्फेट के साथ कौन अटैच है ना, कॉलिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट रिलेटेड टू व्हाट नॉट सपोज्ड टू बी लेसिथिन। लेसिथिन रिलेटेड क्या क्या नहीं है, तो लेसिथिन रिलेटेड क्या है बोलिए पहले ना, एक्ट एज सर्फेक्टेंट प्रेजेंट इन द lungs alveoli with amphipathic nature, polar head and non-polar tail both are present, hydrophilic hydrophobic end present है, with choline or nitrogenous group present है, additional group यहाँ पे phosphate है, that is why called as phospholipid। clear है? तो नंबर 2 कंप्लीट है सबका। ये हो गया फॉस्फोलिपिड। नंबर 2 ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में देखिए एडिशनली क्या प्रेजेंट होगा ना, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, sphingolipid। First of all, remember the sphingolipid is present in, that is found in myelin sheath। पढ़े थे ना, नॉन फाइबर में माइलिन शीथ होता है। तो माइलिन शीथ, एक चीज तो आपको याद होगा कि माइलिन शीथ इज प्रेजेंट कॉल्ड एज माइलिनेटेड, एंड माइलिनेटेड में फास्टर कंडक्शन होता है कि स्लो कंडक्शन होता है, फास्टर कंडक्शन। एंड आपको बोला था मैंने क्लियरली, आपको याद होगा कि जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहां पे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज नहीं होता है, याद है? The ion channels present where the myelin sheath is present is not open or not functional. Why so? Because the myelin sheath is impermeable to ion channels. Why it is impermeable to ion channels? Now because it is made up of lipid. कौन सा लिपिड? स्फिंगोलिपिड। इसीलिए आयन चैनल्स वहां पे नॉन फंक्शनल है, and that is why the ion channels will be functional where the myelin sheath or sphingolipid is absent and it is called as node of Ranvier। तो इसीलिए एक नोड से दूसरे नोड को वो जंपिंग लाइक पास करता था कि नहीं, सो कॉल्ड एज फास्टर कंडक्शन, सैल्टेटरी कंडक्शन। समझ में आया? एंड इसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है मैं मेंशन कर देता हूं, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है, दैट इज गैलेक्टोज। ना नंबर 3 लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे लिपिड के साथ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। एंड आप लोग पढ़े हैं कि लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन वेयर, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है कि नहीं? एंड द लास्ट वन नंबर 4 क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड में एडिशनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा ना, लिपिड प्लस पिगमेंट। हम एग्जांपल देते हैं सीधा, कैरोटीनॉइड का एग्जांपल तो दिए थे ना, कैरोटीनॉइड द पिगमेंट associated or along with the lipid, and that carotenoid is from the carotene, the derivative of what, vitamin A। So this is all about
द कंपाउंड लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड, उसके बाद क्या था? डेराइव्ड लिपिड। हाँ, वेरी गुड। derived lipid. First of all, derived lipid जो है no fatty acid but fat like properties. No fatty acid but fat like properties. That is why it is called as derived lipid. हम लोग सीधा एक के बाद एक डिस्कशन करते हैं. So we are coming to the number 1 first. And steroid. Most common steroid is sterol. Like what? Cholesterol. तो सबसे ज्यादा जो अबाउंडेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड आपके बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरॉल. एंड व्हिच स्टेरॉल इज मोस्ट कॉमन? दैट कोलेस्टेरॉल. So we are going to discuss about the cholesterol, right? हम लोग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे. Most abundant animal fat. Most abundant animal fat synthesized where? कहाँ पे synthesized होता है भाई? ये नहीं जानते कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे synthesized होता है? लिवर. कंप्लीट है क्या? So we are coming to the structural related to the structure related to the cholesterol. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. So this is actually structure of cholesterol. Three cyclohexane, one cyclopentane with branched side chain. Cholesterol actually the main component of or the primary component of
एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप लोग पढ़े हैं कि कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव से बहुत सारा स्टेरॉइड हार्मोन बनता है, पढ़े हो? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, द हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द गोनाड्स, ये सब क्या है? स्टेरॉइड है। तो स्टेरॉइड हार्मोन मतलब डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डेरिवेटिव ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। और क्या है? आप लोग जानते हैं कि सनसाइन विटामिन किसको बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज सनसाइन विटामिन? एक्चुअली सनलाइट में विटामिन डी होता है, तो क्या होता है? सनलाइट में कोई विटामिन डी नहीं होता है। When the early sunlight will fall on the skin and skin के नीचे क्या है? फैट। कौन सा फैट? कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दैट विल बी चेंज इनटू व्हाट? विटामिन डी। तो विटामिन डी आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, ताकि थोड़ा सा जो अर्ली सनलाइट है आपकी बॉडी के ऊपर गिरे, तो आपको थोड़ा सा विटामिन डी बॉडी में सिंथेसाइज। इसमें दो फायदा है, एक तो विटामिन डी आपको मिल रहा है, दूसरी बात है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में हो रहा है, राइट? So next, this is all about the cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू स्टेरॉइड। हम लोग नंबर 2 में आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोग 12th में पढ़े थे, याद करिए प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़े थे कि नहीं? क्या पढ़े थे? प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल कहाँ पढ़े थे 12th में? नहीं, और कोई? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? एक्चुअली हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का दो रोल है। नंबर 1 रोल, दे एक्टिवेट द स्पॉन, स्पॉन को एक्टिवेट करता है। सेकेंड है, दे एक्चुअली इंक्रीज द यूटेराइन मोटिलिटी। आपको समझेगी नहीं? सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, during the continuation of pregnancy, the prostaglandin amount should be in limit, decreased, or that will be high quantity. बताइए, जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्वांटिटी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? And during the parturition or childbirth, the prostaglandin level should be high or should be low? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या रहता है? इंक्रीज द यूटेराइन मोटिलिटी। तो प्रेगनेंसी के टाइम में यूटेराइन मोटिलिटी शुड बी डिक्रीज्ड, एंड यूटेराइन मोटिलिटी को डिक्रीज कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। सो रोल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड रोल ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑपोजिट। दैट इज व्हाई थ्रू द प्रेगनेंसी द प्रोजेस्टेरॉन विल मेंटेन टू डिक्रीज द यूटेराइन मोटिलिटी, बट ड्यूरिंग द parturition the prostaglandin will increase the uterine motility so that the parturition process will facilitate. Second point, during the fertilization process, when the sperm is ejaculated into the female reproductive tract, the sperm should reach at the site of fertilization, that is ampulla, as possible as fast along with the ovum. तो उसको फास्ट जाके मूव करके पहुंचना है एम्पुलरी साइट में, तो उसको एक्टिवेशन करना जरूरी है। एक्टिवेशन मतलब उसका मोटिलिटी को फास्टर करना। Who will increase the sperm motility by means of activating it? तो प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे एक हार्मोन का काम कर रहा है कि नहीं? हार्मोन का मतलब क्या होता है?
Now those who send the message, those who communicate the message, इसीलिए हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, केमिकल मैसेंजर. सो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द डेरिवेटिव ऑफ और इट इज एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन द सेल्स. तो ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर हुआ कि इंटरसेलुलर मैसेंजर हुआ, और यही है क्वेश्चन. So it is intercellular messenger and it is derived from arachidonic acid. ये arachidonic acid का डेरिवेटिव है. प्रोस्टाग्लैंडिन इज नॉट ए फैटी एसिड, इसमें फैटी एसिड नहीं होता लेकिन डेरिवेटिव ऑफ arachidonic acid है. समझे? दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए ट्रू लिपिड और ट्रू फैट. और ये arachidonic acid वाला क्वेश्चन में पूछेगा. हमने क्या बताया था आपको? हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक या एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक. ये क्वेश्चन है. तो वी हैव फिनिश्ड डिराइव्ड लिपिड. डिराइव्ड लिपिड के अंदर यही दोनों चीज हम लोग को डिस्कशन करना था. किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे. बोलिए यस और नो. चले आगे. We are coming to the next topic under the biomolecule, nucleic acid. कैरेक्टर क्या है न्यूक्लिक एसिड का? मैक्रोमोलेक्यूल present in the acid soluble की acid insoluble pools. Acid insoluble pool. That is a retentate or that is a filtrate. Retentate acid insoluble macromolecule, and this is a polymer of what? So it is a polymer of nucleotide. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए? क्या क्या कॉमन है? एक तो उसमें एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये 3 नाइट्रोजनस बेस कॉमन. और क्या कॉमन है? इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड. क्या है? डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. As already I've told, in nucleic acid is polymer of nucleotide. इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? Polynucleotide. So nucleic acid is also called as polynucleotide. Now, nitrogenous bases आप लोग जानते हो, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर कौन कौन आएगा? एडेनिन एंड गुआनिन. पाइरीमेडिन के अंदर कौन कौन आता है? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल. डीएनए में अलग होता है, आरएनए में अलग होता है. So nitrogenous bases plus सुगर. कौन सा सुगर? पेंटोस सुगर. पेंटोस सुगर हम लोग डिस्कशन किए हैं. मे बी इट इज राइबोस और मे बी डीऑक्सीराइबोस. Togetherly now nitrogenous bases plus pentose sugar is called as what?
न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मींस glycosidic bond is to be formed in between the nitrogenous bases and pentose sugar to form the nucleoside. Now, the nucleoside plus phosphate. क्या बोलेंगे? Nucleoside plus phosphate gives rise to nucleotide. न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। नॉट फॉस्फोडाइज्ड। आप लोग अगर हर चीज को बहुत ही लाइटली लेंगे ना तो फंसेंगे। देखिए मैं बताता हूं। दिस इज सपोज टू बी शुगर। शुगर हम लोग पढ़े हैं, पेंटोस शुगर, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5 कार्बन, याद है ना? अब इस शुगर के साथ कौन अटैच हुआ ना? नाइट्रोजनस बेस। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाउ उस शुगर का 3 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ऐड हुआ, राइट? नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लिक एसिड। One sugar, one nitrogenous base with one phosphate called as what? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? ईस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर हम बताएं कि एक न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होता है, तो यहाँ पे भी एक शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेसिस होगा, है कि नहीं? एंड इस शुगर के साथ भी एक फॉस्फेट बाइंड करेगा, इस शुगर के साथ भी एक फॉस्फेट बाइंड करेगा। तो अब आप बता सकते हैं कि शुगर के दोनों साइड में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं? नाउ इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विल बी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लिक एसिड, नॉट न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं आपको पहले न्यूक्लियोटाइड पूछूंगा तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? ईस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर मैं आपको न्यूक्लिक एसिड पूछ रहा हूं तो क्या हो जाएगा आंसर? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर। समझे? As it is present in either side of the sugar, one with 3 carbon, another with 5 carbon. That is why it is called as phosphodiester. Now nucleotide plus nucleotide gives rise to nucleic acid. This is nitrogenous basis. This is nucleoside. This is nucleotide. These are the 5 different type of nitrogenous bases. अब नाइट्रोजनस बेसिस के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियोटाइड भी अलग होगा, न्यूक्लियोसाइड भी अलग होगा। तो न्यूक्लियोसाइड विल बी कॉल्ड एज what when the nitrogenous base is adenine? That will be called as what? Adenosine. This is guanosine. This is
cytidine. This is thymidine. This is uridine. Now nucleotide. This is called as adenylate acid. This is guanylic acid. This is cytidinic acid. This is thymidinic acid, and this is uridinic acid. अब इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आता है वो तो समझ लीजिए. क्वेश्चन है साइन साइन साइन. दिखा कि नहीं दिखा? बट क्या तीनों सेम है? एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन. इनमें से एक नाइट्रोजनस बेस है, बाकी दो क्या है? न्यूक्लियोसाइड है. ये है नंबर 1 क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड. ये है फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आपको पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर बिलोंग्स टू द डीएनए एंड आरएनए. वहां पे थायमिन भी होगा, थाइमिन भी होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थायमिन एंड थाइमिन? ये क्या है? विटामिन B1 है, और ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है. तो स्पेलिंग को भी चेक करिएगा. समझे कि नहीं समझे? ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टॉपिक से. फिनिश्ड है? चले नेक्स्ट पेज में. कुछ स्ट्रक्चर हम बता देते हैं जो एक्चुअली एनसीईआरटी का ही कुछ स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को समझना जरूरी है. लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट वन इज अल्फा राइबोस की बीटा राइबोस. क्या है ये? OH ग्रुप कहाँ है? ऊपर है. तो क्या हो गया? सेकेंड वाला क्या है? बीटा. सेकेंड पोजीशन में मैंने आपको बोला था यू नीड टू look at least to the second position, whether it is hydrogen or hydroxyl group. Then it is phosphatidine.
यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द एडेनिन? एडेनिन इज अ प्यूरिन, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। एडेनिन में किस पोजीशन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है? फर्स्ट 379। किस पोजीशन में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट? ऐसे ही क्वेश्चन आता है क्योंकि ये सब डायग्राम एनसीईआरटी का है। लोग रोज डायग्राम देखते हैं, लेकिन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन आता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 1. This is the structure of uracil. This is the structure of cytosine. The last is thymine. As you can see here, in case of thymine, it is completely similar to uracil. देखिए तो यूरासिल के साथ पूरा सिमिलर है कि नहीं, बस फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको? बाकी रेस्ट आर सेम. That is why the thymine is always called as 5-methyl uracil. Thymine is also called as 5-methyl uracil. तो प्यूरिन की किस किस पोजीशन में नाइट्रोजन है? फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ. पाइरीमाइडिन के किस पोजीशन में नाइट्रोजन है? फर्स्ट एंड थर्ड.
ये आप लोग का फर्स्ट एग्जाम कब है? 28 चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर ना? This is the structure of what? This is the structure of sugar, nucleoside और nucleotide. ये किसका डायग्राम है? न्यूक्लियोसाइड. विच न्यूक्लियोसाइड? एडेनोसिन. दिस इज द न्यूक्लियोसाइड पार्ट ऑफ डीएनए की पार्ट ऑफ आरएनए. क्यों डीएनए आप लोग बोले? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन में क्या है? डीऑक्सी है. तो इट शुड बी, इट इज द एडेनोसाइन पार्ट ऑफ डीएनए की पार्ट ऑफ आरएनए. ऑप्शन में बोथ भी दिया होगा, करके आ जाएगी बोथ. नीट में फर्स्ट क्लास में बोला था, नीट कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं. आप लोग उसको सोच सोच के ना इतना डिफिकल्ट बना देते हैं, जैसे सोच सोच के हम लोग पॉपुलर कर देते हैं किसी को. आप समझ में आ रहा है कि नहीं? सोशल मीडिया में उसको हम पॉपुलर बना देते हैं, लेकिन उसको वो हक नहीं है. लेकिन हम उसको सोच के उसको ऐसे बना देते हैं कि हाइप बना के. वैसे ही नीट कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम. बस आपको क्वेश्चन का तरीका ढूंढ लेना है कि कैसे बनाना है. मैं 50 बार बोल चुका हूँ, सेकंड पोजीशन में आपको नजर होना चाहिए फर्स्ट. दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? ये कौन सा बॉन्ड है? Glycosidic bond is formed between the sugar and nitrogenous base. Nitrogenous base किस कार्बन के साथ अटैच हुआ? फर्स्ट. यही सब क्वेश्चन है. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस अटैच विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन फर्स्ट कार्बन. नाउ this is the structure of what? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोटाइड कौन सा न्यूक्लियोटाइड? guanilic acid. कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए.
आरएनए। फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेटाइल किसके साथ अटैच है अभी यहाँ पे? फिफ्थ पोजीशन, एज इट इज ए न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये आपको समझना है कि एक न्यूक्लियोटाइड का कौन सा एंड फॉस्फेट है, कौन सा एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड है। हम लोग क्या बोलते हैं, 3' OH एंड, ये 3' फॉस्फेट एंड, क्या बोलते हैं? 5' फॉस्फेट एंड बोलते हैं कि नहीं, एंड 3'। अब देखिए आपके सामने 3' देखिए OH एंड है, 5' देखो कौन सा एंड है। हर चीज बारीकी से समझना पड़ता है। व्हाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का 3' एंड खाली रहता है, whereas 5' एंड फॉस्फेट होता है, इसीलिए 3' OH एंड बोलते हैं, 5' को हम लोग फॉस्फेट एंड बोलते हैं। हम लोग दिखाएंगे डायग्राम में पूरा डीएनए। कंप्लीट है क्या? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? एस्टर बॉन्ड, एंड दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कंप्लीट हो गया, राइट। As ester bond present on either side of sugar, as ester bond present in either side of sugar, as ester bond present in either side of sugar, in bracket 3 carbon and 5 carbon, 3C 5C, bracket close, of nucleic acid। मैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा, क्या लिखा? ऑफ न्यूक्लिक एसिड, so called phosphodiester bond, phosphodiester bond। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड लिखता तो फॉस्फेट कहाँ पे बाइंड होता है? 5' पे। देखा, 3' पे बाइंड नहीं होगा, 5' जब ये न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, then only that will be binding both 3' and 5'। So now we are going to discuss about the Watson and Crick model of DNA. DNA is a double-stranded helical structure is act as a genetic material DNA को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट वायरस। वायरस के केसेस में मैक्सिमम क्या होता है ना, आरएनए। ठीक है, दैट इज व्हाई वी यूनिवर्सली हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते, बट प्रैक्टिकली इट इज एज इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए डू नॉट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, कौन सा स्ट्रक्चर है डीएनए का? कैसे आपको दिख रहा है? वो कोलाजन हेलिक्स की तरह दिख रहा है कि नहीं? और कोलाजन हेलिक्स क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या था? दैट इज व्हाई इट इज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बाकी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं डायग्राम करने के बाद ही बताऊंगा।
मैं यहाँ पे बी डीएनए कर रहा हूँ, तो बी डीएनए में ईच हेलिक्स और ईच टर्न कंटेन्स हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस पेयर? कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए देख के करिएगा, मैंने 10 किया है। दिस इज ए बी डीएनए, तो each helix or each turn contains 10 base pair. And that length is, इसका लेंथ कितना होगा? (34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, because 1 नैनोमीटर is equal to 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो 1 पिच हो गया, इसको बोलेंगे क्या हम लोग? 1 पिच और 1 कॉइल, इसको बोलेंगे 1 पिच और 1 कॉइल और 1 टर्न, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 1 पिच और 1 कॉइल और 1 टर्न, लेंथ कितना है ना? 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर। तो फिर अगर ये बी डीएनए है, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा? दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में गैप कितना होगा? डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर, सॉरी एंगस्ट्रॉम और 0.34 nanometer. And this is actually the angle, 360 degree angle. बात को समझिए और देखिए, इधर देखिए, देखिए एवरीवन, ये हो गया एक हेलिक्स हो गया, मतलब एक एक्सिस हो गया, राइट? ये डीएनए क्या है ना, ऐसे कॉइल्ड हुआ लाइक दिस। ये हो गया 1 टर्न, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम घूम के इधर आया, तो कितना डिग्री हुआ ना? इसलिए 1 टर्न और 1 पिच कितना है? 360। अगर 360 है तो दो बेस पेयर के बीच में एंगल कितना होगा? डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 36। एंड इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस हो जाएगा ऑब्वियसली 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम। ये है उसके पीछे का कहानी। अब इसको थोड़ा सा हम और एलाबोरेट करते हैं। नंबरिंग भी कर देते हैं।
मैंने आपको बोला था क्लियरली कि फर्स्ट पोजीशन में हमेशा नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है विद द शुगर, राइट? अगर एक स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड एडेनाइलिक एसिड है, देन उसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड में उसके अपोजिट एंड में कौन सा न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए? हाइब्रिडाइलिक एसिड, है कि नहीं? आप लोग पढ़े हो क्लियरली कि A बाइंड विद T. Bind means of how many hydrogen bond? Double hydrogen bond. And cytosine bind with the one, that is cytidyllic acid bind with the, that is guanylic acid by means of how many hydrogen bond? 3. अब एक चीज आप गौर कर सकते हैं क्लियरली, फिफ्थ कार्बन में देखिए, 5 कार्बन में देखिए फॉस्फेट प्रेजेंट है, एंड 3 कार्बन देखिए क्या है ना, दैट इज फ्री है। 3 कार्बन में क्या था? हाइड्रोक्सिल था। अच्छा, तो ये करना है, ठीक है। ह्यूमन एरर है इसको तुम इतना, सर देखिए ना ये गलत आंसर दिया है। अरे गलत आंसर इसीलिए दिया है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक। आप अपना कंसेप्ट को चेंज मत करिए, आप अपना कंसेप्ट को बुक के हिसाब से चेंज मत करिए कि भाई ये ए के बदले डी दिया तो डी ही है और सर ने गलत पढ़ाया, ऐसा नहीं है। वही सही है जो आप जानते हैं। नाउ इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट ना, 3 डैश, हम लोग क्या बोलते हैं 3 डैश 5 डैश बोलते हैं कि नहीं? देखिए 3 डैश 5 डैश, और यहाँ पे देखिए रिवर्स है कि नहीं, 3 डैश 5 डैश। So it is actually both the strands are identical, कि both the strands are complementary. This is 3 dash OH end. This is 5 dash phosphate end. Here it is 5 dash phosphate end, and this is 3 dash OH end. बाकी related to the bond, अब इस बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे? शुगर के दोनों साइड में है, क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। And this is called as what? The hydrogen bond. And this is glycosidic bond. So that is why the nucleic acid contains all the 3 different type of bond: phosphodiester, hydrogen, glycosidic. इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन ये है
कि इन स्टेयरकेस डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉइल्ड स्टेयरकेस की तरह है कि नहीं? तो स्टेयर मतलब एक सीढ़ी, तो सीढ़ी में रेलिंग्स भी होता है, स्टेप्स भी होता है. Which of the following component act as a railing and which of the following act as a footstep or stair? That is what another steps कौन बना है? बोलिए. Sugar phosphate backbone form what? Railing or footstep? Sugar phosphate backbone क्या बनाता है? Railing. लेकिन नाइट्रोजनस बेस क्या बनाता है? स्टेप्स. आपको समझ रहे हो? नाइट्रोजनस बेस आर फेस इनवर्ड की फेस आउटवर्ड. फेस क्या है? बिकॉज इट इज एंटी पैरेलल. अगर ये पैरेलल होता तो 3-5 इधर भी 3-5 होता. तो क्या नाइट्रोजनस बस फेस इनसाइड होता? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता? अभी लास्ट क्वेश्चन. टू डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर coiled each other की coiled upon itself? Coiled upon each other की coiled upon itself? आप अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे ना तो ये जो कॉइलिंग है जैसे था वैसे ही रहेगा. मतलब दो कॉइलिंग अलग अलग है, आप इसको फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं. So it is not coiled upon each other. It is although we can say coiled around itself. बात तो समझे? तो 3 to 4 पॉइंट है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, फटाफट लिखिए. DNA structure has two unbranched anti-parallel strands. DNA structure has two unbranched anti-parallel strand. यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया. अनब्रांच्ड है कि ब्रांच्ड है, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. टू स्ट्रैंड्स आर नॉट coiled upon each other. Two strands are not coiled upon each other, but coiled upon itself around a common axis. But coiled upon itself around a common axis with base pair forming steps, base pair forming steps, while the sugar phosphate backbone, while the sugar phosphate backbone of two strand sugar phosphate backbone of two strand forms the railing. Next point, nitrogenous bases. Next point, nitrogenous bases are project more or less perpendicular to sugar and phosphate backbone, to the sugar phosphate backbone, and face inside. ये है point. And face inside. ठीक है? And the last point,
Two strands of DNA double helix. Two strand of DNA double helix are complementary. So non-identical. So non-identical. That is A double bond T, C ट्रिपल बॉन्ड G. क्लियर है? इसीलिए अगर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाऊंगा इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहता है यहाँ से, और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री होने से क्या फायदा होता है.